Cloud security fundamentals. Actually, already we have seen in between the issues, various issues of your cloud computing. We'll name the issues. Anybody has point out what are the issues in the cloud computing whenever we are migrating our data onto the cloud? Then some of the basic issues like privacy, compliance, security, sustainability. Sir, downtime can be also issue. Suppose if we are migrating a bank software onto the cloud, so the bank software will be not used for 2-3 days or depending on that time. So customers will have to face the issue. That can be also issue. Perfect. That anyway covers in this particular side headings. Sustainability, then higher cost is also one issue. Yes or no? What happened? It's not happening. Then some recovery of lost data in contingency. I'm just writing the basic things, okay? This is sixth one. Seventh one is like you can say that pay per use services charges. When it related to actually cost only, pay per use service charges. So I'm talking about these are the basic things already we have discussed in any means, right? In our most of the topics when we have talked in the characteristics of the cloud computing, then we have gone through this all the security issues. These are called as the issues actually. These are not fundamental. These are the issues of cloud computing. Right? At least if you should know, right? If anybody asks you what are the issues, different issues, so immediately at least you should have 4 or 5 numbers: privacy, compliance, security, sustainability, and etc. etc. Okay. So what basically this cloud security fundamentals means what? Whenever we are trying to migrate our data onto the cloud, then the first concern and the first foremost concern for any industry, right? Those who are using the cloud services is nothing but the security. Cloud security is the biggest concern, right? Even though if you are doing any of the things, right? If you are handing over your data to some other person, you are handing over your half done work to some other person, then security, whether that person is going to be carry that work in the same manner that what you have driven through so long time, that will be the big concern. Okay, so every time we must ensure, right, whenever you are migrating your data to the cloud, that whether your data is doesn't going to be faced any difficulties, or you can say such a difficulties means what, like a loss of data or data theft or anything else, right? We might have heard between Facebook data breaches, then LinkedIn data breaches. Some of the issues are, some of the case studies are available on the online. If you go and search the security breaches in cloud computing, you will be listed some top 3-4 companies, right, where exactly the security threat already happened. Okay, so whenever we are talking about cloud security fundamentals, then this cloud security fundamentals has been actually named as a cloud risk, because it risks the cloud setup. Now, what exactly mean by cloud risk? Of course, whatever the service they are going to offer, there might be some risk. Okay, so to face this risk, to handle this risk, one organization called as Cloud
Security Alliance. You might have heard. Okay, it's short. In short, it is called as a CSA. Okay, this is one organization. Okay, this is one organization who is looking after the security of your cloud computing. How the security can be improved for the cloud providers. Okay, so what exactly this Cloud Service Alliance will offer? This offers some certifications to the cloud. Certifications to cloud providers. ये क्या करता है? Cloud provider जो है, cloud provider कौन कौन है? एक आधा एग्जांपल बता सकते हो आप? Azure. बिल्कुल, Azure, AWS हमने ऑलरेडी देखा है. These are the cloud providers. Okay. अगर मैं आज के डेट में बोलता हूँ कि Facebook, okay, these are the cloud provider for the social media platform. Okay, तो ये Cloud Security Alliance, it is an organization. What it will do? Okay, it will offer some certification courses. Right? जैसे कल विश्वनाथ तुमने एक मुझे एक लिंक भेजा था, राइट? सिक्योरिटी के ऊपर, AWS के ऊपर लिंक था, मैंने चेक किया वो. But that is, yeah, that is a training program. If you want to go for offer that particular services in the AWS, right? What they are doing, they are giving the training, okay, to the what customers, like users, like we. Okay, anyway, we are going to actually doing some MOU with the AWS also. Okay, we are in the process to doing some MOU so that they will provide a free online courses for you. Okay, so I am, and college is now in the process to tie up with this AWS platform, right? We are in that process. Once we will be done, then we will let you know. Then you can enroll and you will get a free of cost all the services. अगर आपने अभी AWS services लेने जाओगे, तो you are not going to get a free of services. You will be get charged there. Okay, so we are in that process to have some MOU so that you will get the benefit of this cloud computing training programs. Okay, so what our point is, what this Cloud Security Alliance offers certifications to the cloud provide. क्यों certification देता है? So that it meet their criteria. It meet their criteria. किसका criteria? जो CSA ने define किया वो criteria है, right? उसको वो पाने के लिए, राइट, उसको मीट करने के लिए, उसके साथ में जुड़ने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर को अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेस की ऑफर देता है. तो ये क्या करता है? ये इसके वजह से आपका जो क्लाउड है, इट विल बिकम अ ट्रस्टेड क्लाउड. इट विल बिकम अ ट्रस्टेड क्लाउड. इट विल रिकमेंड सम स्टैंडर्ड सर्विसेज, सम स्टैंडर्ड्स, जैसे आपने सुना होगा ISO स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड्स. उसी तरह से अगर आपने डेटा, AWS के पास में क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का स्टैंडर्ड है, बिकॉज इट कंप्लायंस विद ऑल द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. दैट इज द रीजन व्हाई टुडे AWS is, we can say that it is the most secure cloud, right away. Whatever the services provided with the different cloud provider, one of the AWS provider, we can say it is a bit a safer cloud where you can put your data. ओके, तो ये कौन बताता है? ये क्लाउड सर्विस, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीजें आपको बताता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउड रिस्क. तो क्लाउड रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कैटेगरीज. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. अलग अलग कैटेगरीज के रिस्क होते हैं, एक टाइप का रिस्क नहीं होता है. कौन कौन से होते हैं? दैट वी विल सी. Number 1, policy and organizational risk. Second is technical risk. Third is legal risk. And legal risk. And fourth, some other risks. Other risk, right? कोई भी चीज हम लोग कैटेगराइज करते हैं, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन सम डिफरेंट सिनारियो द रिस्क आर गोइंग टू बी हैपन. ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट क्लाउड रिस्क. क्लाउड रिस्क मींस व्हाट? समथिंग रिस्क could be happen or maybe happen in the future, or that already happened.
ओके, सो कौन कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं? ओके, सो दीज आर द ब्रॉड मेन 4 कैटेगरीज. ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट? पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क. आपको नाम से ही समझ में आएगा कि इसमें क्या हो सकता है. पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, देन technical risk, and then legal risk and some other risk. So we'll see one by one कि exactly क्या होता है. मीन्स उसके भी साइड हेडिंग्स मैं आपको बताता हूँ, so that क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी. First we will look at to this policy and organizational risk. कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? अब जब मैं बात करता हूँ पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क की बात करता हूँ, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन क्राइटेरिया, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट हैज इट्स ओन पॉलिसीज. ओके, इवन क्यों आप एक नॉर्मल दुकानदार के पास जाते हो तो उसके खुद के पॉलिसीज होते हैं, वो उसके खुद के पॉलिसीज के हिसाब से ही काम करता है. इफ यू आर सेटिंग अ वन बिजनेस, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट, so you are having your own policies and some standards. Okay, try to understand. Okay, even though it is a small business, even it is a big scale business, if for example cloud or AWS, okay, the policies would be there. Okay, whether there would be a larger number or in a small number. So first, policies and organizational risk में अगर हमने उसके कैटेगरीज देखे, उसके रिस्क देखे, तो कौन कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं? Change your right. Just a minute. Okay, take different color. Okay, fine. First in lock-in. नहीं सुना है वर्ड, ये वर्ड आपने? लॉक-इन. यस सर. क्या होता है लॉक-इन यानी नॉर्मल वर्ड में? सर फॉर एग्जांपल अगर अपन आज इंश्योरेंस लेते हैं और कल उसको क्लेम करते हैं तो फिर वो नहीं क्लेम होगा. लॉक इन पीरियड मतलब उसको प्रोसेस होने में या उसको एक्टिव होने में टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल कई कंपनियों का लॉक इन पीरियड 3 महीने बाद होता है, तब इंश्योरेंस क्लेम कर सकते. तो तेरा इंश्योरेंस है या नहीं, इन शॉर्ट? यस सर. यस, दैट्स व्हाई यू नो द वर्ड. ओके, तो परफेक्ट एग्जांपल, और मैं वही एग्जांपल देने वाला था जो विश्वनाथ ने आपको बताया. अगर आपके पास LIC के पॉलिसीज होंगे, अगर आपने निकाला होगा, तो क्या होता है, उनके लॉक इन पीरियड होता है. ओके, LIC के नंबर ऑफ प्लान्स रहते हैं अलग अलग. ओके, तो उसमें क्या होता है कि जब आप पॉलिसी लेते हो तो कुछ कुछ पॉलिसीज जो है वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम तक आप कुछ कर नहीं पाते हो. फॉर एग्जाम्पल, भले आपने 25 ईयर्स का पॉलिसी निकाला. ओके, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको जस्ट समझने के लिए यहाँ पे बोलता हूँ कि सपोज आपने एक पॉलिसी निकाला फर्स्ट ईयर से लेके सपोज 25 ईयर्स तक पॉलिसी. इसमें ऐसा होता है कि आपको कम से कम, अगर आपने रिफंडेबल पॉलिसी भी लिखा तो वहां पे कुछ तो एक कंडीशन रहता है कि फ्रॉम 1 to 5 दिस वुड बी योर लॉक इन पीरियड. दैट मीन्स व्हाट? आप यहाँ पे कुछ भी पैसे आप रिफंडेबल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. इट्स अ लॉक इन पॉलिसी. आप समझने की कोशिश करो. मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, बट आप क्लाउड में भी इसी तरह से होता है. कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर इसी तरह से काम करता है. आफ्टर 5 years, डिपेंड ऑन देयर पॉलिसी, you will withdraw or you will get a monthly money back, whatever would be there. ओके, तो लॉक इन का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि when your applications, I'm writing here, थोड़ा सा बोलता हूं तो लिखता हूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा. When applications, comma, your data and services are depend upon only one cloud provider. Only one cloud provider is known as what? Lock. बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, राइट, बट आपके सर्विसेज, आपके एप्लीकेशंस अगर एक क्लाउड पे डिपेंडेंट है, ओके, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं बोलूंगा कि लॉक इन पीरियड. ओके, तो लॉक इन पीरियड का प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है या
प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज अ रिस्क ना, अगर वो लॉक इन हो गया है राइट, तो क्या होगा, आपको जब चाहे जब सर्विसेज एक्सेस कर रहा है तो यू कैन नॉट एक्सेस दैट सर्विसेज बिकॉज देयर इज अ लॉक इन। ओके, सो दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। अब लॉक इन कौन कौन से हो सकते हैं, देयर कुड बी अ सास लॉक इन, सास लॉक इन और पास लॉग इन और आई आस, कुछ भी लॉक इन हो सकता है, ये डिपेंड ऑन क्लाउड प्रोवाइडर। ये लॉक इन प्रॉब्लम क्यों आता है, व्हाई इट कम्स, बिकॉज ऑफ हाई कस्टमाइजेशन ऑफ योर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द यूजर डिमांड, अकॉर्डिंग टू हाई कस्टमाइजेशन। अगर ज्यादा कस्टमाइज आप करते हो, हाई कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड, अगर आप करते हो तो आपका क्लाउड प्रोवाइडर उसको लॉक कर देगा, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाउड ओनली। ओके, तो उसके पास वो पूरा पावर है, वो सर्विसेज को यूज करना है कि लॉक करना है, डिपेंड ऑन हाई कस्टमाइजेशन ऑफ योर यूजर डिमांड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द लॉक इन, ये जो है this category comes under your policy and organizational risk. This is one thing. Second thing is loss of governance. ये आप टॉपिक्स तो भी याद रखते जाइए प्लीज, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से कहीं पे भी आप उसको डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन हुआ कुछ हुआ तो यू कैन हैव अ गुड डिस्कशन इफ यू आर हैविंग दिस सब हेडिंग्स इन योर माइंड। लॉस ऑफ गवर्नेंस, अब लॉस ऑफ गवर्नेंस यानी क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर समटाइम इट मे गिव सब कॉन्ट्रैक्ट टू द आउटसोर्स सर्विसेज। आउटसोर्स सर्विसेज बोले तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ थर्ड पार्टी, या ये वर्ड आपको अच्छे से पता होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, आउटसोर्स करता है क्लाउड प्रोवाइडर, क्या करता है, कुछ हमने देखा था राइट, क्लाउड बस्टिंग देखा था। ओके, तो क्या करता है, थर्ड पार्टी को दे देता है, अगर उसका कैपेसिटी ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी को देता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने थर्ड पार्टी को दे दिया तो अगेन इट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, गारंटी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इजंट इट और नॉट। आपका खुद का काम आप जो करते हो, आप जो डेडिकेशन के साथ में करते हो, एंड यू आर गिविंग द सेम टास्क टू सम अदर पर्सन, सम थर्ड पार्टी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके माइंड में कॉम्प्रोमाइज वाला फंडा होना चाहिए, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते हो। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं जिस 100% गारंटी के साथ में काम कर रहा हूं, आगे वाला बंदा भी उस तरह से 100% में काम करना चाहिए। डू यू फील दैट वर्क्स? जो भी यहाँ पे मैन पावर का भी आपने काम किया होगा लोगों के साथ में, तो ये बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस आएगा। इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है मालूम है, मैन पावर हैंडलिंग इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। किसी किसी लोगों को हैंडल करना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ, बिकॉज उनका फ्रीक्वेंसी, उनका सोचने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, आपकी फ्रीक्वेंसी ये मैच होगा, इसकी ओनली 1.1 या 0.2% चांसेस है, अदरवाइज मैक्सिमम आप जाओ राइट। आप चार लोग जब फ्रेंड्स लोग मिलके भी कुछ चीजें करने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे वहां पे। ओके, तो लॉस ऑफ गवर्नेंस होने के चांसेस है व्हेनेवर यू आर गिविंग योर सर्विसेज, व्हेनेवर द क्लाउड प्रोवाइडर इज ट्राइंग टू गिव द आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी। तो ये दिस वुड बी अरे कहाँ गया, कंट्रोल जेड होता नहीं करे प्रिंट पे, I'll write once again. What happened? क्या था? Loss of गवर्नेंस। ओके, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, गवर्नेंस थर्ड पार्टी को देना। थर्ड पार्टी को देना यानी मतलब क्या है, थोड़ा सा
क्वालिटी के साथ में, थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना। ओके, थर्ड होता है इसमें compliance challenges। compliance challenges। अब compliance challenges यानी क्या होता है? क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं? दे विल इन्वेस्ट फॉर द एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस। They will invest for some external external certifications, okay, such as स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? सच एज SAS, ये स्क्रीन दिख रहा है? किसी का रिप्लाई नहीं आया तो आई एम वरीड। दिख रहा है सर। फाइन फाइन, ओके। सो व्हाट? सच एज SAS 70, SAS 70 ये एक सर्टिफिकेशन है। PCI DSS, राइट, एटसेट्रा, ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन है। SAS यानी क्या होता है? स्टेट ऑन ऑडिटिंग, ये सर्टिफिकेशन है, स्टेट ऑन ऑडिटिंग। PCI DSS यानी, यस कोई बता सकता है क्या जो ऑनलाइन काम करते हैं? पेमेंट, PCI स्टैंड्स फॉर पेमेंट कार्ड व्हाट, ये सब शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्री। एंड DSS यानी क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये कुछ सर्टिफिकेशंस है। Why this certification has to be given to the cloud provider? To make us some standards, to make us some reputations. Okay, for example, if a client using AWS cloud, अगर कोई client है जो AWS cloud client को यूज कर रहा है, cloud को यूज कर रहा है, and you want to use a EC2 services, and if the EC2 services does not have a PCI compliance, try to understand. एक customer है, just a minute, a customer hai, this customer wants to use the EC2 services, EC2 services, and is a customer. Okay, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर suppose it doesn't have what? PCI stands for what? PCI stands for पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। अगर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? Then that EC2 service cannot use for your credit card related transactions. Getting or not? तो ये क्या है? ये what is this? This is the compliance challenges. Compliance challenges यानी क्या है? ये जो AWS है, this AWS has to take the certification program of what? This PCI for data security standards, to maintain a data security standard. अगर इसने ये सर्विस को लिया नहीं है और ये सर्विस को ये यूज नहीं कर रहा है, and customer wants to access and do some online transaction, then that customer is not able to perform that online transaction, because the basic thing क्या है भैया? वो जो Amazon EC2 क्लाउड है वो PCI को फॉलो करता है क्या? PCI का सर्टिफिकेशन उसके पास है क्या? Simple na. For example, if you want to go to the doctor, what you see? Directly घुस जाते हो क्या क्लिनिक पे? नॉर्मल एग्जाम क्या देखते हो? अरे वो MBBS है क्या, BDS है क्या, MD है क्या, राइट, BHMS है क्या, राइट? घर के बाजू में तो चलो सर्दी खांसी होगी तो BHMS के पास गए, 2-4 दिन ज्यादा रही सर्दी खांसी तो फिर से BHMS के पास जाओगे क्या, या फिर सर्टिफाइड पर्सन के पास जाओगे? सर्टिफाइड पर्सन के पास जाओगे। आर यू गेटिंग ना? मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी जब मैं पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क की बात करता हूं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? दैट यू शुड नो अवेयर अबाउट द लॉकिंग प्रोसेस, यू शुड अबाउट द लॉस ऑफ गवर्नेंस यानी क्या होता है, यू शुड नो कंप्लायंस चैलेंजेस यानी क्या होता है।
Yeah, कहाँ थे हम लोग? Yeah, we are at the third this policy and organizations. The fourth one is cloud service termination or failure. ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Possible is. Yeah, of course it's a possible ना. Cloud service termination failure हो सकता है. Though we are expecting 24/7 service, right? That is what we call always as a high availability of all services. But in this particular situation, there may be a problem. There may be a lack of financial problem. There may be a lack of business strategies, right? Or some other may reasons. Because of that, there may be a cloud service termination or failure is there. And the last one under this heading, fifth one is supply chain failure. Supply chain failure means again, we can say that this is again the third party supply chain failure. This is again there is a possibility cloud जो outsource करते हैं हम लोग, right? और supply chain बोले तो there would be a chain of coordination between the cloud provider and that particular third person. Okay, so there may be interruptions, there may be a corruptions. Okay, we don't know ना. हमने तो दे दिया उस particular third party को, but we don't know about that person, that particular services. So there may be interruptions, there may be a corruptions in that particular chain. So there may be a lack of coordination, right? So because of that, again, there would be a threaten or there would be some organizational risk for the cloud computing. Okay, so this is all about your one type of policy risk that we are discussing, that is policy and organizational risk. Inside this वो exactly यानी क्या होता है उसके लिए आपको ये 4-5 points आपको पता होना चाहिए. Number one is lock-in period. The lock-in period means what? Whenever we are depending on some particular cloud, okay, there may be a scenario you may lock in have in the PaaS, SaaS or IaaS. Then we have seen the loss of governance. Okay, loss of governance means what? There may be a third party resources. Okay, if they are not doing the certification part, then there may be a chance of cloud risk. Okay, so this is loss of governance. Then compliance challenges. Certification करना जरूरी होता है. अगर नहीं होता है तो हमने देखा कि एक एग्जांपल AWS का क्या होता है तो. Then third one is next one is cloud service termination, right? Because of some business failure strategies, lack of financial problems, right? There may be a cloud service termination और उसको failure करना पड़ेगा. यानी आपको समझा ना, cloud service termination यानी ऑटोमेटिक नहीं होगा. आपने सपोज माइग्रेट किया क्लाउड के ऊपर, राइट, और आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी आपका क्लियर नहीं है, आपको आगे कैसे उसको लेके जाना आपको पता नहीं है. हो सकता है आपके पास फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो जो क्लाउड पे आपने माइग्रेट किया उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा या तो उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा. उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली देयर मे बी अ रिस्क ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड सप्लाई चेन फेलियर मींस देयर वुड बी a lack of coordination between your cloud provider and the third party resources. Okay, so this all comes under your one policy, that is policy and organizational risk. Now second one is, this is done. Second is technical risk. Technical risk यानी क्या होगा? Again it related with the some of the technical aspects of your cloud providers only. Okay, so if possible we will cover that thing in a थोड़ा सा explanation लगेगा और वो शायद हो सकता है time beyond जाए. So we will take that part in our next lecture. Will it be okay? Then we can stop here only.